ब्रह्मा च लोकाधिपति सहम्पति कथंजलि अंधिवरम अयाचत संतिद्ध सत्ता अपरक्ष जातिका तेसे सुधम्मम अनुकंपिमम भजम।นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่23กันยายนพุทธศักราช2561ก็เป็นวันที่4สำหรับการปฏิบัติถือว่าเป็นวันสุดท้ายสำหรับทริปนี้ก็คิดว่าญาติโยมก็คงจะได้รับอะไรเยอะแยะมากมายอยู่เหมือนกันนะสำหรับข้อปฏิบัติต่างๆเราก็ได้ทั้งส่วนที่เป็นสุตตะและส่วนที่เป็นการภาวนาทั้งที่ส่วนที่เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากครูบาอาจารย์ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบละฉะนั้นวันนี้เป็นวันถือว่าสุดท้ายสำหรับครูบาอาจารย์ได้มาเยี่ยมหรือมาช่วยเป็นกำลังใจมันยังไม่แน่นอนแต่ก็หวังว่าคงไม่ใช่ครั้งสุดท้าย แต่ก็เผื่อเป็นอนิจจังอยู่บ้างเหมือนกันนะตาม ลักษณะของธรรมะโดยเฉพาะหลวงพ่อชาท่านจะให้ใช้คำนี้ตลอดคือคำว่าไม่แน่ ถึงจะแน่ขนาดไหนก็ต้องย้ำเตือนให้เกิดสติว่าไม่แน่แน่ขนาดไหนก็บอกไม่แน่ไว้ก่อนมันจะได้แบ่งเบามันจะได้ไม่หนักแต่เรื่องอนาคตเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนเรื่องอดีตก็ไม่ใช่สิ่งที่จะไปพัวพันกับมันมากดังนั้นต่อไปในการดำเนินชีวิตของเราก็คงจะใช้หลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยที่เรียกว่าปัจจุบันหรือปัจจุบันนะธรรมะดังคำที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้ปัจจุบันนันจะโยธัมมังตัทธะวิปัสสติ ผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้น
เฉพาะหน้านะในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งเนี่ยไม่โลเลควรรักษาและพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้นั่นคือจะทำให้เรานั้นมีสติรู้เท่าทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งความสุขความทุกข์ความพอใจไม่พอใจที่เกิดขึ้นในขณะนั้นถ้าเราอยู่กับปัจจุบันมันจะป้องกันไม่ให้เราตกนรกถ้าลืมปัจจุบันไม่มีอะไรที่จะกันบางทีมันก็พลันตกนรกได้เหมือนกันฉะนั้นการอยู่กับปัจจุบันจึงเป็นสิ่งยืนยันให้เราเดินไปสู่ประตูสวรรค์ก็ได้ไม่ต้องรออนาคตไม่ต้องรอชาติหน้าดังสำนวนไทยๆได้ยินมาตั้งแต่เด็กนักปราชญ์ท่านพูดเอาไว้ท่านบอกว่าสวรรค์ในอกนรกในใจนิพพานก็อยู่ไม่ไกลอยู่กับปัจจุบันมันจะเห็นการไปการมาโดยเฉพาะทางด้านจิตใจท่านพูดถึงทางด้านจิตใจจะเห็นอารมณ์ที่มาเกี่ยวข้องกับจิตจะเห็นจิตเห็นอารมณ์แล้วจะเป็นผู้ที่รู้เท่าทันอารมณ์ส่วนมากที่ไม่ทันอารมณ์เพราะว่าเราลืมปัจจุบันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันบางทีใจมันก็วิ่งไปอดีตเสียไปอนาคตเสียกระโดดข้ามไปกระโดดข้ามมาเนื้อกับตัวก็กลายเป็นคนลืมตัวลืมตนก็คือไม่มีสตินั่นแหละ So today is Sunday, the 23rd of September in 2561, and it's the fourth day of our practice period together. You can say it's the last full day that we're together, and Luang Por Jundee hopes that all of us have gathered a few thoughts and ideas that are of use for our practice in this period. And these thoughts, they are things that we hear, that we come through sutta, through hearing, and we use it for our bhavana, for our practice. And have expressed it and experienced it and passed already. So coming here is meant to give each other support and encouragement. And Luang Por says it's the first time to come to this location for him, and of course it's not sure what will
happen in the future. He hopes that it's not the last opportunity to to visit and show support. But very, very important is to always take the Dhamma that Ajahn Chah emphasized, of all things being not sure, or in Thai they say mai nae, not sure, and it's not a sure thing. However sure one may be with something, one always needs to remind oneself that things are essentially not sure. And so then we're not hit by things that may come up without us anticipating them. And regarding the past, we try to not get too involved and not to go back too much and entangle ourselves in the past. And in the present, we use what the Buddha called the Pacchupanna Dhamma, the Dhamma of the present moment. And like in the quote that we have in our chanting books, Pacchupanancha yotamang tata tata vipassati asanghirang asankupang tang vitammanupruhaye. Whoever sees clearly the Dhammas in the present, unwavering, unshaken, arises mindfulness right in time of things arising, whether we are in favor of the things that arise or we aren't. We stay in the present moment, and our being in the present moment is a guarantee for us not falling into hell realms in our thinking, and it is a confirmation for us walking towards a heaven realm. We see the portals of hell and walk towards heaven through staying in the present moment. Luang Por quotes a little saying that's a common Thai saying about having heaven in one's chest and hell in one's heart, but being present in the presence of Nibbana. So this seeing the Dhamma in the present is very important, because we use it to watch our mind, watch whatever mind states arise, whatever aramanas, or in Thai they say arom, which also means the mood states, mood swings arise, right when they arise, presently. And we don't jump back to old mind states or old moods or old feelings from the past, but we stay in the present. If one were to move around and jump around to the past and future, it would be comparable to somebody who is not really there in his body. He's not really present. He's not there with his mindfulness. He's not present. He has no sati. लुंग पोर जी ने आज पहले फिर से हमें याद दिलाया कि आज रविवार है 23 सितंबर, और आज का आखिरी दिन है जब हम सब इकट्ठे होंगे। वो आशा करते हैं कि जो हमारा चर्चा हुई है उससे हम लोगों ने कुछ अच्छे विचार, कुछ समझ अपनी साधना के लिए, ताकि हमारी भावना अच्छी हो, उसके लिए लिए होंगे। कहते हैं कि जो सूत्र हम पढ़ते हैं, परिवृत्तीय काम करते हैं, उससे हम सीखते हैं साधना के बारे में, लेकिन असली सीख तो अपने अनुभव के आधार पे होती है, और उसके लिए हम यहाँ सपोर्ट करने के लिए और इनकरेज करने के लिए आए हैं। और मुझे आशा है कि ऐसा होगा हमारे आने से। मैंने ये भी कहा कि भविष्य में क्या होगा कुछ पक्का नहीं है, इट इज़ नॉट श्योर, और वो आशा करते हैं कि ये उनकी आखिरी विज़िट नहीं होगी, भविष्य में भी आना होगा। बताते हैं कि ये जो अनसर्टेनिटी वाली बात है, नॉट श्योर, ये अनिश्चितता की तो बात है, वो एक बहुत अनित्य बोध की एक एस्पेक्ट है, और अगर हम उस बात में स्थापित हो जाएं तो आने वाली जो भी परिस्थिति हो वो हमको हिट नहीं करती, हमको परेशान नहीं करती, और हम उन परिस्थितियों में एंटेंगल भी नहीं होते। तो और हम हमेशा प्रेजेंट में ही, पच्चुपन्ना धम्मा जिसे कहा जाए, प्रेजेंट माइंड स्टेट जो भी प्रेजेंट में हो रहा है उसी को देखते रहते हैं, और भूतकाल के बारे में चिंता नहीं करते, भविष्य के बारे में एंग्जाइटी नहीं रहती।
जो भी whatever arises, जो भी उत्पन्न होता है मन के अंदर, जो भी स्टेट आती है, चाहे वो हमको अच्छी लगती हो या बुरी लगती हो, प्रिय हो या अप्रिय हो, हम उसको देखते हैं और उनको परेशान नहीं कर पाती है। और वो ये भी कहते हैं कि प्रेजेंट में रहना एक तरह से गारंटी है कि हम निरय लोक में नहीं जाएंगे, और उस तरह से प्रेजेंट में रहने से, वर्तमान में जीने से हम स्वर्ग की ओर एक तरह से कहा जाए तो उसकी ओर हमारी गति उस तरफ बढ़ती है। आपने कॉमन थाई स्टेटमेंट बताई जो मुझे समझ नहीं आई कि चेस्ट में हेवन है और हेल में, हार्ट में हेल है, मुझे समझ नहीं आया, मैं भी बाद में हम पूछ सकते हैं उनसे। आपने कहा कि हमको निरंतर अपनी माइंड स्टेट्स देखते रहना चाहिए, और जिसको कि कहते हैं वो ऑब्जेक्ट ऑफ हमारा अटेंशन जो आरंभन है वो माइंड स्टेट्स हों, और उनको इतनी निष्पक्षता से देखें कि हम अपनी पुरानी यादों में ना समयหลวงพ่อชาท่านเผยแพร่ธรรมะใหม่ๆกับชาวบ้าน หลังจากท่านแสวงหา ธรรมะ ได้พบธรรมะแล้วมาเผยแผ่แก่ชาวบ้านญาติโยมคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยท่านก็จะเอาเรื่อง ปัจจุบัน สอนเขาให้เกิดความเข้าใจเนี่ยเพราะคนทั่วไปก็คงจะไม่ผิดกันกับคนทางนี้ก็คงจะมีเหมือนกันเนี่ยส่วนมาก ถ้าเป็นบุญหรือเป็นสวรรค์เป็นนิพพานก็มักจะมองไปถึงอนาคตไกล ดังมีคำหนึ่งเวลาทำบุญทานเนี่ยก็จะบอกว่าทานังเมปริสุทธัง แล้วก็มีต่อท้ายด้วยว่านิพพานะปัจจโยโหตุอนาคเตกาเล คืออนาคตข้างหน้าโน้น ซึ่งทุกครั้งเวลาถวายของ ก็มักจะพูดอย่างนี้นิพพานะปัจจโยโหตุอนาคเตกาเล ขอ ให้บุญกุศลนี้เป็นปัจจัยสู่พระนิพพานโน่นเถิดเนี่ยเดี๋ยวว่าชี้ไปไกลๆโน่นท่านก็เลยให้มาแก้ใหม่ ท่านบอกว่าเอาอนาคตใกล้ๆไม่ดีเลยหรือให้มาปัจจุบันไม่ได้หรือถ้าอย่างนั้นมันก็จะข้างหน้าไปเรื่อยชาติแล้วชาติเล่านะหรือพรุ่งนี้มาก็บอกไปข้างหน้าอีกนะปีหน้ามาก็บอกปีหน้าไปอีกชาตินี้ก็บอกชาติหน้าไปอีกเนี่ยมันก็เลยไม่ถึงสักทีท่านบอกมันไม่ถึงเนี่ยท่านก็เลยมาเปลี่ยนวิธีการมาว่าให้มองเข้ามาเหมือนกับพูดเมื่อวานนี้ว่าให้มองเข้ามาด้านใน ให้มองมาที่ปัจจุบันเนี่ยถ้ามาที่ปัจจุบันแล้วมันจะเห็น ถ้าอยากเห็นนรกก็จะเห็นอยู่ในปัจจุบันจะเห็นสวรรค์ก็จะเห็นในปัจจุบันเห็นอยู่ที่ไหนเนี่ยเห็นในใจนี่แหละท่านบอกท่านสอนง่ายๆเห็นในใจเนี่ยนรกคืออะไรนี่สภาวะความของความทุกข์หรือความร้อนรนเนี่ยเป็นสภาพของนรกเนี่ยถ้าใครทุกข์คนนั้นเป็นสัตว์นรกทั้งหมดความทุกข์นั่นเป็นเหมือนนรกใครทุกข์คนนั้นเป็นสัตว์นรกสวรรค์คือความสุขถ้าใครสุขก็เป็นเทวดาเสวยในสวรรค์นี่ท่านก็บอกง่ายๆอย่างนี้ถ้ารู้จักละรู้จักวางได้ในปัจจุบันมันก็เหมือนนิพพานในปัจจุบันท่านก็ชี้มาตรงนี้หรือถ้าอยากเห็นเห็นยักษ์เห็นเปรตเห็นอสุรกายท่านก็ชี้ให้มาดูที่ตัวเราบางทีเราเห็นรูปยักษ์รูปมารเขียนไว้ในกระดาษ
แต่ว่ายักษ์หรือมารหรือเพศหรือเปรตผีมันเกิดขึ้นในใจเราไม่เห็นนะท่านก็มีมุกคำๆนะอยากเห็นยักษ์ไหมท่านบอกพอออกไม่ออกอยากเห็นยักษ์ไหมเนี่ยถ้าอยากเห็นเวลาโกรธมากๆถือกระจกมาส่องดูนะท่านบอกมาส่องดูว่ามาส่องดูหน้ามันเป็นอย่างไรเนี่ยตามันจะแดงเนี่ยหน้ามันจะแดงฟันก็ดูไม่ได้แลบลิ้นปริ้นตาเนี่ยนี่ท่านให้มองมาตรงนี้นี่อยากเป็นไหมอยากเป็นยักษ์ไหมถ้าไม่อยากเป็นยักษ์เนี่ยก็มาแก้สถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยท่านให้มองมาที่ปัจจุบันให้มันเห็นปัจจุบันนะถ้ายิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขมันก็เป็นเทพเป็นเทวดาปรากฏให้เห็นในปัจจุบันนะในขณะนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยหาความสุขให้ได้ในเดี๋ยวนี้ขณะนี้เนี่ยเพราะเราเห็นอยู่เนี่ยความทุกข์เกิดขึ้นเราก็เห็นความสุขเกิดขึ้นเราก็เห็นเนี่ยแล้วจะไปเอาตรงไหนจะรอข้างหน้าโน่นหรือเนี่ยข้างหน้ามันไม่แน่นอนดังที่กล่าวแล้วเนี่ยอนาคตมันภาษาไทยก็ว่ามันคดงอมันไม่แน่นอนนะมันไม่ตรงอ่ะอนาคตมันยังไม่ตรงทีเดียวนะถ้าปัจจุบันนี้มันแน่นอนตรงนะถ้าเราสร้างความสุขได้ในเดียวนี้ขณะนี้นะอาตมาก็พูดบ่อยเดี๋ยวนี้พูดเรื่องนี้บ่อยนะเพราะอยากให้คนเห็นปัจจุบันและอยู่กับปัจจุบันนะถ้าเราสร้างความสุขขึ้นได้ในเดี๋ยวนี้ขณะนี้เนี่ยหรือนาทีนี้เนี่ยนาทีหน้ามันก็เป็นปัจจัยไปสู่ความสุขเราทำดีวันนี้พรุ่งนี้ก็เป็นสิ่งรับประกันว่ามันก็จะเป็นความสุขเพราะเราได้สั่งสมเอาไว้เนี่ยชั่วโมงนี้ชั่วโมงหน้านี่แหละชาตินี้ชาติหน้าก็คือเหมือนชั่วโมงนี้ชั่วโมงหน้านี่แหละหรือชั่วโมงที่ผ่านไปนั่นแหละนี่มันเข้ามาใกล้ตัวใกล้ปัจจุบันนะถ้ามาใกล้ตรงนี้มันจะเห็นชัดมันจะไม่สงสัยนะถ้ามองไปข้างหน้ามันสงสัยเรื่อยไปเนี่ยท่านก็จะบอกลักษณะนี้เนี่ยดังนั้นถ้าอยู่กับปัจจุบันจะทำให้เราเห็นทั้งอดีตเห็นทั้งอนาคตเราเห็นข้อปฏิบัตินะที่จะทำอดีตให้มันดีหรือมันไม่ดีอนาคตมันดีหรือไม่ดีนะมันก็เลยกับตัวปัจจุบันเป็นตัวAfter having practiced and seen the Dhamma Luang Por Chah when he newly started to teach and spread his understanding to people, he used to very much point out that the realization and all the practice should be always in the present moment, that all the concepts of making merit and doing good deeds for the sake of heaven and for even for Nibbana, they are too far in the future. One should do these things in the present moment. There's a popular Pali phrase, tanang me lapang nippanang pacayoti anakate kale, that it's a great gain for me to give goods. May they be a cause for my Nibbana in the future times. Luang Por Chah always commented, why always wait for the future? Take the near future at least. Even better, make tomorrow, today, and use the goodness right as it arises. Take a look at the present and do your good deeds right with a mind that is grounded in the present. Don't look too far away, like Luang Por Jundee mentioned yesterday. Don't look too far away and take the Dhamma inside, and don't allocate it too far in the future. Just take it to the present. And if one likes to see what's in store, like Luang Por Chah pointed out, if you like to see heaven and hell, which is a popular
at your mind when you're full of suffering. And if you want to see how your mind, how it is like in heaven, then look at your mind when it's happy, when it has sukha, like a deva, like a heavenly being. And it's very easy. If you want to then know what it's like to be without heaven and hell, then practice to see Nibbana in the present moment. This is what Luang Por Chah pointed out, because people usually ask, they want to see pretas, yakas, asura, some maras, and like they've seen in the pictures. But Luang Por Chah pointed out that they should just look at the ghosts and spirits that arise in their own hearts and the demons. And if you wanted to see a demon, he would tell you, look at yourself when you're angry. Take a mirror and you could look at yourself when you're angry. Your red eyes, red face, big teeth, ugly face. Do you want to be a yaka? Just look at yourself. You want to be a deva? Then embellish yourself with the goodness of deva present. And look at people that are happy people. They've got the radiance of a deva. Don't wait till the future, because the future is not sure. It's a long and windy road until you reach the future. But the Pachubana Dhamma, the Dhamma of the present moment, is straight ahead, lies right in front of you. If you can build happiness in this moment right now, this second, you can reap the benefits right away. So that you don't have to postpone it to future hours, moments, days to become happy, and you don't have to look towards a distant goal, but stay in the presence. And that's the main point of our practice. Then the past, our good and bad actions that we may have done, they are irrelevant, and the present good and bad actions turn into our presence of mind at the very moment. आगे आपने बताया कि लुंग पोर चाह ने जब धम्म का अपना और कि सारे जो भी हमारे पुण्य करने की बात होती है या दान देने की बातें हैं, उसमें सामान्यतः ये बात है कि भविष्य में उसका लाभ मिलेगा। और ये भी चैंटिंग की जाती है, रम में हमने सच्चे हो तू कि भविष्य में मेरा पुण्य बना उसका भविष्य में निबान हो। तो लुंग पोर चाह ये कहा करते थे कि भविष्य की बात क्यों कर रहे हैं, हमें कल ही करो ना, कल ही हो जाए निबान, परसों ही हो जाए, पहले ही हो जाए, आज ही हो जाए। तो उसको हमेशा वो कहते थे कि जो आपका लक्ष्य है उसको प्रेजेंट में रखो, इतनी दूर मत रखो। लुंग पोर जुंदी ने भी कल बताया था कि साधना जो भी करनी है तो एक हाथ दूर मत रखो और नज़दीक लेके अपने अंतर मन में साधना करो। इसी तरह से समय का भी दूर मत रखो, समय को बिल्कुल प्रेजेंट में इस समय क्या हो रहा है तो उसको इस समय मेरे मन में क्या आ रहा है उसको जानो। और उसी से जो कई बार लोगों को रहता है कि स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, उसी से आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा। अच्छे मन की स्थिति जो है स्वर्ग की स्थिति कही जाएगी, जो दुखी मन है उसकी स्थिति जो है वो प्रतिरूपण है एक निरलोक का। और इन्हीं को देखते देखते ये भी समझ में आएगा कि स्वर्ग और नरक से ऊपर उठते हुए निब्बान के कैसे अनुभव किया जा सकता है। और उसको भी प्रेजेंट मोमेंट में ही रखें, उसको भी भविष्य में ना धकेलें। कई बार लोग लुंग पोर चाह के बाद आते थे कि हम देवा कैसे होते हैं, प्रेत कैसे होते हैं, निरलोक के प्राणी, तो वो कहा करते थे कि अगर तुमको कोई असुर देखना है तो जब तुम बहुत गुस्से वाले हो तो अपने शीशे में अपना चेहरा देख लिया करो, तो वो असुर का चेहरा दिख जाएगा। और जब अगर देवता को देखना है, जब बहुत प्रसन्न हो, बहुत अपने को खुद प्रसन्न हो या किसी दूसरे प्रसन्न आदमी को देखो, तो समझ लेना कि देवता का चेहरा ऐसा होता है। कभी भी वो कहा करते थे कि भविष्य के ऊपर इंतज़ार मत करो, पच्चुपन्ना धम्मा, जो इस समय हो रहा है, जो भी इस समय मन की स्थिति है उसको ध्यान में रखिए। जो बिल्कुल आपके सामने है उसको देखिए, भविष्य में क्या होगा या पास्ट में क्या हुआ था उसकी याददाश्त में मत खो, इस समय क्या हो रहा है उसको जानना चाहिए। นั้นถ้าใครอยากเห็นสัตว์นรกก็ส่องกระจกบ่อยๆนะ อยากเห็นสัตว์นรกส่องกระจกบ่อยๆ
นี่หลวงพ่อชาท่านบอกว่าถ้าเราไม่ได้อยู่กับตัวไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยตกนรกอยู่มันก็ไม่รู้เลยขึ้นสวรรค์ก็ไม่รู้ตกนรกก็ไม่รู้เนี่ยมันร้อนจะตายแล้วทุกข์จะตายอยู่แล้วก็ยังไม่รู้เนี่ยแต่ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยถ้าว่าเราตกนรกให้เรารู้เอาไว้เนี่ยขึ้นสวรรค์ก็ให้รู้เนี่ยไอ้ความรู้นี่แหละเนี่ยที่เราต้องการเนี่ยการดำเนินชีวิตของคนก็ทำได้ขึ้นสวรรค์บ้างตกนรกบ้างแต่ให้มันรู้เอาไว้เนี่ยว่านรกมันร้อนสวรรค์มันเย็นเนี่ยก็ให้รู้จักถ้ามันรู้จักนรกเวลามันตกนรกมันก็จะหาวิธีออกจากนรกนะเหมือนเราตกที่โคลนตมนั้นบอกนะรู้ว่าเป็นโคลนตมเนี่ยมันสกปรกหรือตกหลุมมูดหลุมคูดเนี่ยมันจะได้รู้จักหาทางออกนะรู้จักออกว่ามันแล้วก็จะเข็ดจะจำว่าตรงนั้นเนี่ยมันสกปรกหรือมันร้อนเนี่ยถ้าคนไม่รู้นี่ตกอยู่ก็แช่อยู่ตรงนั้นแหละเนี่ยรู้แต่ว่ามันร้อนแต่มันไม่หาทางออกจากความร้อนแต่เพิ่มความร้อนให้มันร้อนขึ้นนะนั่นลักษณะของสัตว์นรกที่มันไม่รู้นะสวรรค์จะเป็นญาติเป็นโยมหรือเป็นใครก็ตามนะถ้าเราอยู่กับปัจจุบันมันจะสร้างความรู้สร้างผู้รู้ขึ้นมาเนี่ยให้เรารู้เท่าเอาทันเนี่ยเวลามันดีใจมันเสียใจขึ้นมาเราก็จะรู้จักเนี่ยจะได้รักษาอารมณ์ของเราเอาไว้เนี่ยถ้าอยากให้ข้างหน้ามันดีเนี่ยมันก็จะรู้จักพัฒนาปัจจุบันให้มันดีเนี่ยเพราะมันมีเหตุมีผลของมันอยู่เนี่ยถ้าเราดีใจตอนนี้ทำดีเนี่ยอนาคตข้างหน้าใกล้ๆมันก็ดีเนี่ยถ้าทำไว้เยอะมันก็เยอะแหละทำไว้น้อยมันก็น้อยเนี่ยทำไว้มากอนาคตมันยังไม่มาแล้วเราก็ตั้งความดีไว้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็ได้ทำแต่ความดีเนี่ยได้แต่ปฏิบัติดีถ้าตั้งไว้กับปัจจุบันนะถ้าลืมปัจจุบันมันลืมเนี่ยอนาคตมารวมปัจจุบันก็ลืมแล้วหายไปแล้วก็ไปตามมารแล้วพยามารมันดึงไปหมดกิเลสตัณหาดึงไปหมดนี่ก็ไม่ได้สั่งสมคุณงามความดีไม่ได้สร้างทางสวรรค์สร้างนิพพานไม่ได้สร้างเลยนี่เพราะมันลืมปัจจุบันนี่แต่ถ้าอยู่กับปัจจุบันมันจะมามันอยู่อนาคตมันก็จะมาตรงนี้แหละนี่แล้วอดีตมันก็จะไหลไปจากนี่แหละจากปัจจุบันนี่แหละนี่ปัจจุบันในอนาคตปัจจุบันในอดีตนี่มันก็จะเป็นสิ่งที่ดีหมดเนี่ยนี่เพราะเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันผ่านไปแล้วเป็นอดีตมันควรเอาอดีตที่ดีเนี่ยเราได้กระทำดีสั่งสมความดีเนี่ยนี่ปัจจุบันในอนาคตมันเลื่อนมามันก็จะมาหาตรงนี้ตรงที่เราอยู่ขณะนี้แหละปัจจุบันนี้แหละเนี่ยมันก็เลยดีหมดเนี่ยฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้เราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยธรรมะที่สำคัญที่สุดคือปัจจุบันนี่แหละพระพุทธเจ้าให้อยู่ในปัจจุบันขณะเราจึงเอามาสวดไงเนี่ยปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถะวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปปังตังวิธามโนภูหะเรเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแง่นคลอนแคลนเขาควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้เนี่ยอัจเชวะกิจมาตปังโกชัญญามรณังสุเวเนี่ยความภาคเพียรความพยายามเป็นสิ่งที่ควรทำในวันนี้เดี๋ยวนี้ใครจะรู้ว่าความตายแม้จะมีในพรุ่งมันมาถึงตอนไหนมันก็เอาตอนนั้นเนี่ยแต่ว่ามันมีเสนามากมีบริวารมากเนี่ยมันไม่ได้ผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยมันไม่บอกว่ารอก่อนให้เราทำโน่นทำนี่เสร็จก่อนให้อายุ
มากก่อนหรือแก่ก่อนเท่าก่อนเนี่ยหรือถึงเวลาอันควรก่อนมันไม่ให้เวลาเรามันไม่ผัดไม่ผ่อนขอต่อรองยังไงมันก็ไม่ให้นั่นคือมัจจุราชเนี่ยก็คือความตายเนี่ยการอยู่กับปัจจุบันมันจึงเป็นการสร้างเกราะป้องกันเนี่ยเป็นคนที่ไม่ประมาทเป็นคนที่เตรียมพร้อมตลอดเวลาเนี่ยแล้วเราพูดกันที่ผ่านๆมาบางทีก็พูดถึงความตายใช่ไหมมรณานุสติเนี่ยนั่นมันเป็นเกราะป้องกันอย่างดีเนี่ยเป็นเกราะป้องกันทำให้เราไม่ประมาทเนี่ยเพราะยังไงมันก็เดินไปสู่ตรงนั้นแล้วกำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้ด้วยเมื่อกำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้มันก็เหมือนกับเหลือน้อยเนี่ยพอเหลือน้อยเราจะทำเตือนตนเองแล้วก็จะได้สร้างเกาะสร้างเกาะโดยวิธีไหนพระเจ้าท่านก็บอกไว้อยู่แล้วเนี่ยนึกทำให้มากๆเพราะไม่มีสิ่งอื่นที่จะดีไปกว่าทำจงทำเป็นเกาะจงมีทำเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยนี่ท่านก็สร้างเกาะไว้ให้ก็คือการสร้างผู้รู้อยู่กับปัจจุบันนั่นเอง So again, if we like to see the beings of hell, we need to look at the mirror frequently. And anytime when we aren't aware of ourselves, we tend to really fall into hell without knowing it and being unaware. But when we revert to going back into the present, and we know what's happening, we know what arises and ceases, what kind of things pull us up and pull us down. We know when we fall into hell and when we rise up to the heavens. And through the knowledge and through bringing it to the present, we are aware of it, and we don't stay or rest or fall into it in the way we would fall into a pothole or a sewage pit or some dirty, filthy situation, or we would know the heat and being able to tell it's hot, we'll find a way to cool it. And this is through being able to realize what's going on, and this is what the present moment awareness or the Paccuppanna Dhamma is about. It actually is like Luang Por Chah said, it points you the way to heaven and avoids that you fall into hell, because knowing with awareness in the present is the key to adjust, to be able to develop and improve and see whatever arises with in a reasonable way according to the causes and conditions. And keeping in the present, we're not fantasizing or following the pulls of things, and we're not being pushed around, but we're able to ground us. Even Nibbana in the present, where there's nothing to rise or to fall, or nothing to gain or to lose, will always just be right there. And this is already a positive feature of our human mind, and it leads to the accumulating of good. We're right aware of what we're doing, and we can avoid all the evil things. So this whole key Dhamma that the Buddha taught, the Paccuppanna Dhamma, to so whoever sees the Dhamma in the present moment, they're just there, and he simply realizes it and sees through it as unshaken, and this should be maintained, and should be maintained in the present. Or Achevan Kichamata Panko Chanya Maranang. So we, like right now, presently, is where we should put forth effort. Effort is to be done today, because we don't know tomorrow death may come,
the Lord of Death, Machuraja, may come. Later we'll do it also, but do things straight away and live with all the duties in the presence, because we might not be granted the opportunity to do things tomorrow. Machuraja is the Lord of Death, and it's all about contemplating death, like Luang Por Jundee mentioned the other day, Marananusati. To contemplate death, be aware of death, is our best refuge against heedlessness, like to be heedless and to be prone to losing the opportunities that we have to practice. So as long as we have the breath, as long as we have life, we should remind ourselves to take the present Dhamma as our refuge, as our island, and not take other things as a false refuge, false island, but take the awareness that we can build up in the present moment as our refuge. आगे आपने कहा कि ये दोबारा पुनरावृत्ति की कि अगर हम नरक लोक के प्राणी देखना चाहते हैं तो बीच बीच में अपना चेहरा शीशे में देख लिया करें, और चेहरा लगता है जब हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। इस बात का संदर्भ यही है कि हमको कोशिश यही करनी चाहिए, साधना ये होनी चाहिए कि हमेशा हम प्रेजेंट में रहें, क्या हो रहा है इस समय उसको जानें। और अगर हम इसका अभ्यास करेंगे तो जब जब चीज़ें उदय होंगी व्यय होंगी, हम कभी नरक लोक के प्राणी जैसे हो जाएंगे, फिर उसको देखेंगे उसको समाप्ति, तो फिर स्वर्ग लोक के प्राणी जैसे हो जाएंगे। तात्पर्य यही कि नेगेटिव मेंटल स्टेट्स आएंगी, कि क्लेश जागेंगे, क्लेश समाप्त हो जाएंगे, उनको भी देख सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम प्रतिक्षण सजग रहें और वर्तमान में रहें तो हमारा साधना जो है स्ट्रांग होती है। उस बात का ये उदाहरण देते हैं गिरने का, कि अगर कोई आदमी जैसे किसी गड्ढे में गिर जाए जिसमें कुछ कोयले पड़े हैं, गर्मी पड़ी है, तो जैसे ही वो गिरता है उसको गर्मी लगती है, तो उसको तुरंत वो देखता है किस तरह से मैं बाहर निकलूं। तो यही सिमिली उन्होंने साधना की दी, कि साधना करते हुए जब भी हमारे अंदर नेगेटिविटी आए, हम निरय लोक के अनुभव जैसे कर में जिएंगे तो अपने आप उस जो निरय लोक की गर्मी है उससे बाहर निकल आएंगे। और ऐसी स्थिति जब होती है तो बाहर की परिस्थितियां हमको इधर उधर धकेल नहीं सकती, और हम प्रेजेंट मोमेंट में रहने के कारण ये भी जान सकते हैं कि किस कॉज के कारण, किस कारण से ये हो रहा है, किस कारण से परेशानी हो रही है, और हमें बाहर की चीज़ें का इन्फ्लुएंस जो है वो कम हो जाता है। और ज़्यादा अभ्यास करने से हम यहाँ तक स्थिति आ जाती है कि हम निब्बान का अनुभव भी इसी प्रेजेंट मोमेंट में ही करेंगे। भविष्य में होगा वो तो सिर्फ विचार की बात है। और ऐसी स्थिति आएगी कि हम कुछ गिरे, कुछ हम न लाभ की चिंता है, न हानि की चिंता है, न कुछ गिर खो जाते हैं तो चिंता है। हम हमेशा एक ऐसे भाव में रहेंगे कि हमेशा प्रेजेंट में रहें, और इस प्रेजेंट में रहने से ही स्वतः ही हमारे पुण्य भी अर्जित होते हैं, और वो उनका जो भविष्य में फल आना है, प्रतिफल आना है, वो भी हमें मिलता है। भगवान की एक की टीचिंग यही थी कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए, समय चैंटिंग्स करते हैं, वच्चुपन्ना चयो धम्मम तथा तथा विपස්සति असम हीरम असंकुप्पम तम विदम अनुभूये। कि जो भी प्रेजेंट में जो हमारी मन की स्थिति राइज होती है उसको वो एक स्पष्ट रूप से देखता है, और जब देखता है और उससे एजिटेट नहीं होता है, इससे हिलता नहीं है, तो वो जो हमारी इंसाइट आती है, जो हमारी समझ अंतर्दृष्टि जागती है, वही हमारी सच की हमारी जो स्ट्रेंथ है, जो बल है, वो वही देती है। और दूसरी एक और उन्होंने जो गाथा उसकी बात है,
अजेव किच्चमत्तपम को जन्यामरणम सुवे नहीं नो संगारंतेन महासेन मच्चुना, कि इस समय जो कर्म को काम करना है उसको ठीक से करें, और भविष्य में क्या होना है कुछ मालूम नहीं, कब हमें मृत्यु का राजा जो है हमको ग्रिप कर ले, और मृत्यु के राजा की जो सेना है उससे हमारा कोई सौदा नहीं हो सकता कि हम डील उससे स्ट्राइक कर लें कि आगे से ये नहीं होगा, या तभी आना जब हम फ्री हों। तो ये बात समझते हुए जो गाथा गाते हैं इसीलिए गाते हैं कि हमें सेंस ऑफ अर्जेंसी जागे, और जो हमारी अप्रमाद की जो स्थितियाँ हैं उससे हम दूर भागें। तो ये प्रमाद से बचने के लिए ही कहा जाता है कि मरणानुसति की बात कही जाती है, क्योंकि अगर हम प्रमाद में रहेंगे तो हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं कि जो हमारे को प्रेजेंट में रहने की अपॉर्चुनिटी है। और जब तक हमारा सांस चल रहा है तब तक हमें इसी बात पे शरण रहनी चाहिए कि हम वर्तमान में जिएंगे।สร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้ในปัจจุบันนะจะเป็นสิ่งป้องกันนรกในอนาคตนะนี่การอยู่กับปัจจุบันนี้มันให้คุณประโยชน์เนี่ยทั้งในการดำเนินชีวิตแบบทั่วไปแบบชาวบ้านทั้งในการปฏิบัติเพื่อขัดเกลาเนี่ยขัดเกลากิเลสจากจิตจากใจเนี่ยก็ไม่พ้นจากการอยู่กับปัจจุบันนะการอยู่กับปัจจุบันทำให้เรามองเห็นนะจิตใจของเรานะจิตใจขุ่นมัวเศร้าหมองไม่ผ่องใสหรือจิตใจที่มีความสุขนะจิตใจได้อารมณ์ที่ดีมีความสุขหรือได้อารมณ์ที่ไม่ดีมีความทุกข์เนี่ยเราจะได้มองเห็นเมื่อเห็นแล้วมันก็เลยจะกันอารมณ์ที่ไม่เป็นที่ยินดีไม่เป็นที่สบายใจนะภาษาธรรมเรียกว่าอารมณ์ที่เป็นข้าศึกต่อความสงบนะมันจะได้มองเห็นนะอารมณ์นั้นเวลาเข้ามาแล้วมันเกิดความขุ่นมัวในจิตใจเนี่ยก็จะเป็นการตัดกั้นอารมณ์เป็นข้าศึกต่อความสงบหรือต่อความสุขเนี่ยอารมณ์อะไรที่เป็นที่สบายของจิตเนี่ยมันก็จะเห็นถ้าเราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมาอีกแล้วมันไม่เห็นด้วยตานอกหรอกแต่มันเห็นด้วยตาในเนี่ยเรียกว่าตาเนื้อถ้าอยู่กับตัวมันตามันสว่างเนี่ยถ้าไม่อยู่กับตัวมันเหมือนกับมันมืดนะถ้าอยู่กับตัวเองมันตาสว่างมันมองเห็นถ้ามันมาอีกแล้วเราเห็นอีกแล้วนะแขกควรรับไม่ควรรับควรขับไล่สายส่งมันก็จะแยกแยะรู้จักนะนี่อารมณ์ต่างๆนั่นแหละมันมาก่อกวนให้จิตใจของเราเนี่ยแปรสภาพนะเป็นโน่นเป็นนี่เป็นได้ทุกอย่างนะดังที่กล่าวเบื้องต้นจะให้เป็นเปรตเป็นแปลสภาพจิตใจให้เป็นอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นนะถ้าเราไปรับมันนะถ้าเรารับเอาอารมณ์ที่ดีมันก็เป็นสักขะหรือเป็นสวรรค์นะเป็นอารมณ์แห่งความสุขก็เรียกว่าเป็นอารมณ์เป็นที่สบายของจิตนะฉะนั้นเราทั้งหลายนี้ต้องการความสุขความสงบทางด้านจิตใจแต่เราก็ไขว่คว้ามองไปอนาคตกันหมดเลย วิ่งไปอนาคตฝันเหมือนพูดเมื่อวานนี้ฝันหวานไปเรื่อยเนี่ยวันนี้วันหน้าชาตินี้ชาติหน้าไปมันไปข้างหน้าเนี่ยนี่พระบรมศาสดาอันนั้นไม่ใช่เนี่ยปรุงไปอนาคตมันไม่ใช่เนี่ยไปฝักใฝ่หรือไปภวักพะวงกับอดีตที่ผ่านไปแล้วก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันทำให้ทุกข์เนี่ยสุขก็ผ่านไปแล้วทุกข์ก็ผ่านไปแล้วเนี่ยทำให้จิตใจเศร้าหมองเปล่าๆเนี่ย
อนาคตก็ยังมาไม่ถึงอย่าไปคิดอย่าไปยุ่งกับมันมากอยู่กับปัจจุบันดีที่สุดเนี่ยท่านก็บอกอย่างนั้นเนี่ยบอกให้หาความสุขไม่ได้เราจะกลายเป็นเรียกว่าคนที่ ผิดหวังเกิดมาดีแล้วแต่ว่าทำให้ โอกาสของเรานั้นมันหมดไปเนี่ยเพราะเราไม่ได้อยู่กับตัวเนี่ยเราไปอยู่กับอดีตอนาคตเสียเนี่ยแทนที่จะสร้างสุขให้เกิดขึ้นได้ในปัจจุบันอะไรๆก็มีพร้อมแต่หาความสุขทางใจไม่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นบุคคลที่น่าสงสารในสายตาของท่านผู้รู้เนี่ยแต่ความสุขสร้างขึ้นได้ในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราอยู่กับตัวเนี่ยถ้าเราไม่อยู่กับตัวก็หาความสุขไม่ได้เพราะเราเป็นทาสเนี่ยที่เราว่าเป็นทาสของตัณหาเป็นทาสของความอยากเนี่ยความเป็นทาสมันจะเป็นสุขได้อย่างไรเนี่ยมันก็สู้เป็นนายไม่ได้แหละเนี่ยถ้าเราอยู่กับจิตใจอยู่กับธรรมะเราก็จะเป็นนายอยู่เหนือสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยอยู่เหนืออารมณ์อยู่เหนือโลกเนี่ยอยู่เหนือโลกเนี่ยแต่เรานี่มันอยู่กับโลกโลกมันทับเนี่ยโลกมันทับมันถมเนี่ยมันก็เลยจมอยู่ข้างล่างอยากสุขมันก็สุขไม่ได้เพราะโลกมันทับอยู่เนี่ยแต่ถ้าอย่างพระพุทธเจ้าท่านอยู่กับโลกพยายามอยู่เหนือโลกมันถึงจะเป็นความสุขขึ้นมาได้ Building up a happy mind in the present moment prevents us from falling into hell realms, and this is important for developing our lives and for our efforts in reducing the kilesas and scraping off defilements and making the mind have the brightness it needs to see all the dangers, all the dark sides, and being in a mind state that can recognize the obstructions to peace as they arise, and being able to see the enemies of a peaceful mind and thus dwell in the peaceful mind is a very important task for us. And this seeing the danger, seeing the dark side, seeing the mind states that arise, seeing of our peace arises not through seeing with the physical eye, but it comes through looking inside, and it's like looking inside, having awareness of our mind, and carefully checking which visitors are coming from the outside, so which are the guests that one should receive and which are the guests that one should send away again. Like it's like what kinds of people are coming, yakas, devas, maras, are coming to visit our hearts. We can see and recognize, and with a mind that is right away aware of what's coming, what's entering our mind, we can guard our minds and remain in the mind state that is unshaken and peaceful. Say, if we receive only the good mind states, then we'll have happiness in the present day, in the present wholesome and rest in the present, but we're wishing for sukha in the future, then it's like what Luang Por Jundee described yesterday as we're having sweet dreams, and they won't turn out the way we like them. We'll be actually proliferating, and what the Buddha called fantasizing, or having these proliferations or the constructions that are disturbing our mind, that are not real, and that eventually lead to suffering and disappointment. If we can find happiness in the present moment, then we're setting ourselves up for trouble and disappointment. And for those who are well practiced,
the ones who know, or the ones that have the awareness about themselves, they would see us as being in a pitiable state, in a state of not being free, still a slave of craving, slave of the fantasy, and slave of the various mind states, not the master that has like the power to stay in a peaceful state, whatever comes. Then one can also say our aim is to rise above the world and not sink into it, but like to be like the Buddha, who is beyond the world, above the world, and who is not carrying it and is suffering under the weight of the world. आगे चर्चा को बढ़ाते हुए आपने कहा कि एक प्रसन्न चित्त जो है वो हमको मेरे लोक में जाने से बचाता है और हमारे क्लेश जो हैं वो घटते हैं। और जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, वर्तमान में जीते हैं, तो हमको समझ में आता है जब इस तरह के अनुभव होते हैं, सुख के अनुभव होते हैं, कि जो नेगेटिव माइंड स्टेट्स हैं, जो उनका कितना खतरनाक चीज़ है, कितना हमें दुख होता है, कितना कष्ट होता है, और जो भी शांति के प्रति हमारे दिक्कतें आती हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस हैं जो उनको शांति की ओर जाने से रोकते हैं, वो भी हमारे समझ में आती हैं। और ये भी समझ में आता है कि शांत चित्त जो है वो कितना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तभी हमको उस शांत चित्त से ही संसार से ठीक से समझ में आता है और हम देख पाते हैं कि क्या क्या जो मन की स्थितियाँ हैं वो हमारे एक तरह से वैरी हैं, दुश्मन हैं। ये देखना जो है को सजग बनाते हैं, संबल बनाते हैं, तो हमको इतनी क्षमता आ जाती है कि हम देखें कि ये कौन सी माइंड स्टेट आ रही है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, कौन सा गेस्ट आ रहा है जो अंदर, अब इस गेस्ट को अंदर आने दिया जाए या बाहर रोक दिया जाए, ये यक्ष आ रहा है कि देव आ रहा है कि मार आ रहा है। इतनी क्षमता अगर आ जाती है जब हम प्रेजेंट मोमेंट में, वर्तमान में जीने का अभ्यास करते हैं, तो मन के अंदर क्या प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है वो भी मालूम पड़ जाता है, तो हम उसको मन के द्वार पे ही रोक सकते हैं। और जब हमने मन की अच्छी स्थितियाँ देखी हैं, प्रसन्नता का अनुभव किया है, तो हम समझते हैं कि किस तरह से मन के जो होलसम स्टेट्स हैं वो किस तरह से कुशल चित्त बनता है और हमारी कुशल चित्त बनाने की क्षमता भी बढ़ती चली जाती है। और अगर हम अभ्यास न करें और केवल इच्छा ही करते रहें कि हमारा चित्त साफ हो जाए, चित्त सुधर जाए, तो एक हसीन ख्वाब जैसे हैं, ये कभी पूरे नहीं होने वाले हैं। हमको उसके लिए वर्तमान में जीना सीखना पड़ेगा जब, और उसकी अच्छा करना पड़ेगा किस तरह से हम वर्तमान तृष्णा के गुलाम हैं, जो कि हमेशा उस तृष्णा के ही चक्कर में संसरण करते रहते हैं। अगर हमें सचमुच में शांति प्रिय रहना है, शांत रहना है, मन की शांत स्थितियों को अनुभव करना है, तो हमें इस संसार से ऊपर उठना होगा। जैसे भगवान बुद्ध ऊपर उठे, संसार के अनुभव हो रहे थे लेकिन वो उसमें लिप्त नहीं होते थे, और इस कारण से जो भार रहता है संसार का वो अनुभव नहीं होता। ถ้าเราเป็นผู้รู้อยู่กับขณะนี้เดี๋ยวนี้จะทำให้เราเข้าใจโลกนะโลกในความหมายที่หลวงปู่ชาท่านไม่รู้ถูกตามหลักหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่ท่านบอกว่าโลกจริงๆเราคำว่าโลกนี่มันความมืดนะในความหมายหนึ่งโลกคืออารมณ์เนี่ยแต่ถ้าภาษาจิตใจแล้วท่านบอกว่าโลกคืออารมณ์เนี่ยถ้าเราอยู่กับขณะนี้เดี๋ยวนี้ทำให้เราเนี่ยเห็นอารมณ์รู้อารมณ์เนี่ยแล้วเราก็จะไม่หลงอารมณ์นะ
ท่านก็เลยมีสำนวนหนึ่งก็กินใจดีนะคนหลงโลกคือหลงอารมณ์นะคนหลงอารมณ์ก็คือคนหลงโลกส่วนมากคนที่หลงโลกก็คือคนไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวนะเพลิดเพลินนะเพลินไปตามอารมณ์ก็เท่ากับเพลิดเพลินไปกับความมืดนั่นแหละนะถ้าอยู่กับตัวมันมีผู้รู้อยู่ในขณะนั้นนะมันจะทำให้เห็นโลกคืออารมณ์นะดังนั้นการอยู่กับโลกกับอารมณ์ก็อยู่เป็นคนที่รู้จักโลกเขาจะไม่แบกโลกเนี่ยถ้าสร้างความรู้ให้ยิ่งขึ้นเห็นโทษของโลกจริงๆก็ถึงอยู่เหนือโลกอย่างพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่ท่านรู้จักโลกดีเนี่ยเรียกว่าโลกวิทูใช่ไหมรู้แจ้งโลกเนี่ยท่านรู้แจ้งโลกจนไม่แบกโลกเนี่ยจนอยู่เหนือโลกนั่นแหละนั่นคือเรียกว่าพุทธะคือผู้รู้จริงๆเนี่ยเราไม่รู้เนี่ยกับเป็นคนไปแบกโลกจะเอาโลกทั้งใบนะทุกคนก็จะแย่งกันแย่งเอาโลกเนี่ยฉะนั้นมีคำหนึ่งที่กินใจที่ครูบาอาจารย์ท่านเขียนเอาไว้อาตมาก็เจอตั้งแต่ยังไม่บวชนะแต่ว่าชอบใจนะท่านเขียนไว้3 ขั้นตอนว่าคนแบกโลกกับคนหามโลกกับคนอยู่เหนือโลกเนี่ยคนหนึ่งอยู่กับโลกแต่แบกโลกคนแบกโลกถ้าไม่รู้จักวางมันก็ทับตายเนี่ยภาษาไทยก็แต่งเป็นกรเพราะอยู่แต่ว่าเอาความหมายก็แล้วกันหรือจะพูดฟังเพราะๆก็ได้ว่าคนแบกโลกยิ่งแบกก็ยิ่งหนักมีคนทักว่ามันทุกข์อย่าแบกไว้เนี่ยยึดตัวกูของกูอยู่ร่ำไปเนี่ยผลสุดท้ายโลกทับดับชีวาเนี่ยมีคนเตือนก็ไม่ฟังพวกนี้จะเอาโลกอย่างเดียวจะแบกโลกคนหลงคนไม่รู้เนี่ยพระเจ้าเกิดขึ้นมาชี้แนะให้ก็ไม่ฟังจะเอาอย่างเดียวไม่ยอมละไม่ยอมทิ้งไม่ยอมวางเนี่ยผลสุดท้ายคนมาช่วยหน่อยเรียกมาหามนะจึงเรียกว่าคนหามโลกเนี่ยก็มีสำนวนเพราะๆเองเหมือนกันแหละเนี่ยคนหามโลกหนักหน่อยค่อยยังชั่วเนี่ยเมื่อรู้ตัวหาคนช่วยแบ่งหาบหามนะถือบางส่วนทิ้งบางอย่างยังดูงามสติตามรู้ทันทิ้งมันไปนี่คนรู้มันจะพัฒนาขึ้นลักษณะนี้เนี่ยรู้อยู่แต่มันยังละไม่ได้ยังทิ้งไม่ได้เนี่ยเอาทั้งที่รู้นั่นแหละมันหนักมากสู้ไม่ไหวก็ยังดีเรียกคนมาช่วยหามหน่อยนะแบ่งเบาหน่อยนะเหมือนเราหนักอกหนักใจเนี่ยหนักอกหนักใจไม่ได้แบกไว้คนเดียวเนี่ยไปหาครูบาอาจารย์เนี่ยท่านช่วยเบาเนี่ยนั่นก็คือหาคนมาช่วยหามมาแบ่งเบาเนี่ยมันก็ไม่หนักมากนะถึงจะแบกอยู่มันก็ไม่หนักมากเนี่ยเหมือนเรามีโน่นมีนี่มีของนั่นแหละเนี่ยอย่าไปยึดคนเดียวแบ่งให้คนอื่นทำบ้างเนี่ยเราเป็นพ่อเป็นแม่ก็แบ่งให้ลูกให้หลานเนี่ยให้เขาจัดการบ้างอย่างนี้มันจะได้แบ่งเบาถ้าเอาคนเดียวมันหนักเนี่ยการแบ่งเบาก็เรียกว่าโลกท่านอยู่เหนือโลกนะไม่ได้ทิ้งเหนือโลกเนี่ยมีสำนวนเพราะๆก็บอกว่าฉันทิ้งโลกไม่เอาเบาจังโว้ยนะไม่โอดโอยครวญครางอย่างเขานั่นเนี่ยมีสติรู้เท่าและเอาทัน
อยู่เหนือมันสูงสุดโลกุตดรเนี่ยนั้นอยู่อย่างลักษณะผู้รู้เนี่ยฉะนั้นอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันเป็นโลกเนี่ยถ้าเราไปยึดไปแบกมันหนักเนี่ยต้องรู้จักละรู้จักวางรู้จักแบ่งรู้จักเบานะมันจะได้ไม่หนักมากเนี่ยแต่ถ้าสร้างความรู้ขึ้นมาถึงจะอยู่กับมันก็ไม่หนักเพราะไม่ได้แบกทีนี้โยมมีของเต็มบ้านโยมก็ไม่หนักโยมไม่แบกเนี่ยแต่คิดว่าของกูหมดไปแบกท่านว่าหลวงพ่อชาว่าเข็มเล่มเดียวก็หนักถ้าขึ้นชื่อว่าแบกเนี่ยนั่นเพราะความไม่รู้เนี่ยแต่ถ้าแล้วโอ้มีเยอะแยะมากมายไม่หนักเลยกลับเป็นประโยชน์ด้วยสำหรับคนรู้นะอย่างพระพุทธเจ้าท่านรู้โลกท่านเอาโลกนั่นแหละมาแนะนำมาพร่ำสอนมาเปรียบเทียบให้เราเกิดความเข้าใจนะนี่ท่านจึงเรียกว่ารู้แจ้งโลกเป็นโลกวิทูเนี่ยนี่ท่านต้องการให้เรารู้ลักษณะนั้น So being somebody who is aware, puru in Thai, means somebody who understands the world. And the world in the idiom of Luang Por Chah, many times he translates it as darkness. And Luang Por Jundee says he's not quite sure whether that's correct in linguistic terms, but it's a common translation used that Luang Por Chah referred to as loka, meaning darkness. And another context, Luang Por Chah said, the world is our arom, the mind states, the aramanas, the moods or the mood swings or the mind objects that we experience. And to say it simply, the world is the mind in terms of how Luang Por Chah emphasized it, and to be not deluded by the world, but to know the world and not to be falling prey and taken astray by the ways of the world, not to be taken astray by one's mood or mood swings or by one's mind states. This means that we see the world and we see, and at the same time we see our mind. We study the world and we study our mind, and we know the world and we know our mind, and we're not being carried away by the world. And we are not also carrying the world, we're not shouldering the world, but we're trying to rise above the world through seeing it, and to be somebody who knows the world. Lokavidu, the knower of the worlds, is one of the epithets of the Buddha. And this is in contrast to the person that's under the weight of the world, who is carrying worldly things, carrying the world, or of somebody carrying the world on their shoulders. And there's a little poem that Luang Por Jundee remembers already since the time before he ordained, and about the person that carries the world on his shoulders. And then there's an expression in Thai to carry the world with a bamboo pole. Like you need two people to carry it, like you carry water or so, or other heavy goods. It's like a different expression of carrying. And then the third person is the one that is beyond the world, he's above the world. So the first one, Luang Por gave this little beautiful poem, is somebody who does not know the world and is carrying everything on his shoulders and will be crushed at some point because the world friends, he will still hold on to it until it finally crushes him. So that's the most pitiable person. The second person, the one that calls somebody else to help to carry the world, the globe on a bamboo pole with 2 or 3 people, is a bit better because he calls other people to help him, and the world will be a little
less heavy. It'll be lighter, and it needs some wisdom to find other people to help, and also to abandon parts of the world and throw away things that aren't needed, that you don't want to carry around on your carrying stick. You have to have some mindfulness and wisdom to be able to decide what to take along and what to just leave. So this one, the second one, is a bit better, but still suffers and still isn't free from the heaviness of the world, even though it's a bit lighter. This is the way we arrange our life in the world, with father, mother, family, business, and calling others to help and make the burden a little easier. But it still essentially is a heavy duty to carry around the world on one's shoulder, with many shoulders. But the last one, the one that's beyond, is not involved with the world, who has sati, has mindfulness, and knows, has knowledge that is beyond the world, and he has left everything. He discards the world, and is higher, and is in a lokuttara state beyond the world, and he knows that all of the things that are arising in the world eventually need to be abandoned and need to be let go of. So he doesn't carry them from the start. So he has nothing to carry, and if we think of the world being our mind, or our mind states, it means that when we are beyond the world, we know how to let go, and we let go of all of mindfulness and wisdom. Then we're able to still live in the world, but we're not carrying it, and the world won't be heavy. And it's different to the people that take little things here and there from the wayside, and they suffer from having to carry it around. Like Luang Por Chah said, even carrying a single needle around could be heavy dukkha. So the one who knows the world clearly is what we call the lokavidu. He's beyond the world. आगे आपने कहा कि हमें हमेशा यही प्रयास रहना चाहिए कि हम वो बने जो कि संसार को जानता है, उसमें दबा हुआ नहीं है। लुंग पोर चah संसार को कभी शब्द लोक को अंधकार की तरह भी ट्रांसलेट करते थे, कि जो संसार को समझता नहीं है वो उस अंधकार में ही पड़ा रहता है, और जो संसार है, लोक है उसका, वो एक हमारे मन की स्थिति है, जिसके हिसाब से, जिसके अनुरूप हम संसार को देखते हैं, एक आरम्भन है। और इसीलिए उसको इस भाषा में भी कहा जाता है कि संसार जो है हमारे मन में है, और अगर संसार को इसलिए जानना है तो अपने मन को ठीक से जानना होगा। जो हमारे मूड स्विंग्स होते रहते हैं, उनके अगर हम चक्कर में पड़े रहेंगे तो हमें संसार को जानने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। संसार को जानने का मतलब है कि हम संसार के जो परिस्थितियां हैं, जो इंटरेक्शन है, वो हमको अपने साथ लेके न जाए, बहा के न ले जाए, वो हमको इट शुड नॉट कैरी अस, और ना ही हमको संसार को अपने ऊपर कैरी करना चाहिए। तो संसार को हम केवल जानने के तौर पे उसके साथ इंटरेक्शन हो, और इसी बात को लुंग पोर कह रहे हैं कि उसी को कहा जाता है लोकविदु, जो भगवान बुद्ध का एक एपिथेट है कि भगवान बुद्ध लोकविदु हैं, संसार को जानते हैं। वो संसार के भार के अंदर नहीं दबे हुए हैं, ना ही वो उसको कैरी करते हैं, तो और ना ही वो उससे प्रभावित होते हैं। कोई आदमी अगर संसार को कैरी करते का उसका मतलब है कि अपने कंधे पे जैसे संसार को उठा के ले जा रहा है। तो लुंग पोर को एक बचपन की कोई कविता है जो ताई में, जिसके बाद एक आदमी के बारे में जो कि अपने बहुत भार उठा के ले जा रहा है, और जब काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो एक और आदमियों को बुलाता है, और वो डंडे पे लगा के दोनों लोग कंधे पे कंधा लगा के दोनों तरफ से वजन बांट लेते हैं। तो उस पोएम के दृष्टांत से वो हमें समझाते हैं कि 3 प्रकार के प्राणी होते हैं। एक वो
जो संसार को बिल्कुल नहीं समझते और उसके वजन को सारा हमेशा अपने आप ही उठा के रखते हैं और उसके भार से इतना ज़्यादा थक जाते हैं, इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो हमेशा दुख का ही अनुभव करते रहते हैं और उनका भविष्य भी, गति भी दुर्गति ही होती है। एक और आदमी ऐसा है दूसरे स्तर का, जो कि जब देखता है भार बहुत हो गया तो किसी और को बुलाता है, उसकी मदद लेता है। सामान्यतः हम भी ऐसा ही करते हैं कि माता पिता की, भाई बहन की, मित्रों की हेल्प लेते हैं हम जब ज़्यादा भारी संसार हम पे भारी पड़ने लगता है। तो उसमें थोड़ी बहुत सजगता है लेकिन पूरी सजगता नहीं है। और जो तीसरा तरह का प्राणी है जो कि लोक विदु बन गया, जो संसार से ऊपर उठ गया, जो कि अब संसार को अपने ऊपर नहीं भारी भार बना के नहीं रखता, उसमें इतनी प्रज्ञा है कि वो संसार को जानता है और इसके माध्यम से लोकोत्तर मन की जो चित्त की अवस्थाएं हैं उनको अनुभव करता है और कुछ भी वो अपने साथ नहीं कैरी करता। इसका मतलब नहीं कि वो संसार में नहीं रहता, संसार रहता हुए भी वो संसार से ऊपर उठा रहता है। वो कोई भी संसार का आलम्बन अपने ऊपर भार बना के नहीं रखता है। มันจะยากหน่อยเนาะอยู่เหนือโลก แต่อย่างไรก็ตามก็พยายามอยู่กับปัจจุบัน มันจะได้รู้ทันโลกนะถ้าเราถึงปัจจุบันก็จะไม่ทันโลก โลกมันก็จะทับถมเรานะถึงเราจะมีความยึดมั่นหมายมั่นนะแต่ก็ขอใช้คำหลวงอยากให้มันมั่นท่านว่าคำนี้นะยึดแต่อยากให้มันมั่นนะยึดไม่มั่นมันจะไม่หนักเนี่ยถ้ายึดมั่นมันจะหนักเนี่ยยึดไม่มั่นนั่นว่าเหมือนกับเราถือแก้วหรือถือถ้วยอาหารเนี่ยถือมากินอาหารแล้วก็วางไว้เนี่ยแม้จานหรือถ้วยหรือแก้วนั้นจะว่าเป็นของเราเราก็รู้จักวางไว้ลักษณะนี้เรียกว่าเราไม่มั่นไม่ยึดมั่นนะไม่ถือมั่นยึดแล้ววางมันก็เบานะถ้ายึดไว้ตลอดมันหนักนะน้อยมันก็หนักนะนี่ถ้ามันยังเอาออกไม่ได้ก็ให้มันเบาให้มันได้นะหมายความว่าของเราให้เข้าใจว่าเป็นของเราโดยสมมุตินะอย่าคิดว่าเป็นของเราจริงๆนะถ้าเป็นของเราจริงๆมันจะแบกไม่ยึดแล้วมันทับเราตายนะแต่ถ้าคิดว่าเรามาชั่วคราวหรอกนะมันเป็นของสมมติหรอกนะอย่าไปยึดมั่นหมายมั่นยึดแล้วก็วางมั่นเนี่ยเรียกว่ายึดไม่มั่นนี่เป็นสำนวนหลวงปู่ชาหลวงพ่อชานะถ้ายึดไม่มั่นมันก็จะอยู่กับโลกได้อยู่สบายนะถ้ายึดมั่นเนี่ยทับตาย beyond the world, but let's try through being in the present and working on having the understanding how to lighten the world and not take it on too heavily. And it's like an idiom that Luang Por Chah, one of his famous sayings, "Yut Mai Man," means like to hold on to it but not hold on tight. I would say, like it's a pun, and I can't fully translate it, but it means like it's like holding it but not holding on to it. Like you touch it or you take it, but you don't take possession of it. And you hold. It's like when you hold a vessel full of food and you eat out the content and put down the vessel. You don't carry around the vessel. You don't carry around your cup after you've drunk, and then things don't feel heavy. And it's appropriate. You take out the stuff that you can and lighten the whole thing and make. ये संसार से ऊपर उठना मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि हम वर्तमान में
हमारा जीवन ही एक संसार है और उसको हम इतना सीरियसली ना लें, उसको भार ना बना के रहें। हम लुंग पोर चाह का उदाहरण था थाई में देते हैं कि हम संसार को से इंटरेक्ट को करें, वी होल्ड ऑन टू इट, लेकिन उसको बहुत टाइटली ग्रिप ना करें, उसके प्रति चिपकाव ना करें। यू होल्ड इट बट नॉट होल्ड ऑन टू इट। जैसे कि कोई वेसल होती है, उसमें बहुत सामान है, यूज़फुल चीज़ें हैं, तो हम उसके अंदर जो यूज़फुल चीज़ें हैं वो निकाल लें और फिर वेसल को होल्ड करके पकड़ के कंधे पे खिराने की कोई आवश्यकता नहीं है। We'll do the questions. Anumodana first or later? Should I do the Anumodana first or later after the questions? Do it now. Yeah. Andmayam Dhamma Kathaya Sadhukaram Dadamase Sadhu 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 Anumodam. यदि कोई प्रश्न हो तो पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। I'd like to add a little saying by like Luang Por Chah, like if anybody has some questions, you're welcome to ask, but don't ask anything heavy. I think I'll begin by asking some part which I had not understood. Heaven in the chest, hell in the heart, and something. Yeah. I couldn't figure out what does it mean. Yeah, so I couldn't figure out. Okay. Mind, and Nibbana isn't far. Nibbana isn't far, isn't a place that's far away. So it means to take the Dhamma inwards and to have it right here. So basically mean that heaven and hell are both inside. Inside. Nibbana is also very much around. It's very close, is around the corner. तो जो बात मैंने कहा था, जो समझ नहीं आई थी उस समय, अपनी बनते जी ने समझाया कि जो नरक हो चाहे स्वर्ग हो, वो सब हमारे हार्ट के अंदर, चित्त के अंदर ही है, और निब्बान भी बहुत दूर नहीं है, तो हमको कहीं और दूर उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, अपने चित्त में ही सब कुछ मिल जाएगा। तो मैंने Bhante, one question I have is that many times what happen is that our moods turn very negative, or there are the mental states where you are more gloomy and you don't have much energy, and you know that these are the states which are coming to you, but at that moment there is no other way, but is there any other way in which we can get over those states and bring our mind to the present moment and be able to do what is required in the present moment? Okay, โยมถามถึงว่าจะมีทางไหนที่เราจะผ่านความรู้สึกหลงอารมณ์ช่วงที่มันเหมือนเป็นหนักมากเราก็เอาความรู้สึกว่ามันมัวหมองก็เศร้าหมองมากแล้วมันขาดกำลังใจที่จะเห็นชัดเรารู้อยู่ว่ามันสิ่งเหล่านี้มันกำลังกระทบเราแต่ในปัจจุบันนั้นเราไม่มีวิธีแก้เพราะขาดกำลังจะมีวิธีไหนที่จะเสริมครับผมให้อยู่ในปัจจุบันเสริมก็เหมือนปัจจุบันนี่แหละแต่ว่าเข้าใกล้กับกัลยาณมิตรผู้มีจิตใจดีจิตใจงามจิตใจ
มีความเมตตามีความอนุเคราะห์มันจะให้กำลังใจเราให้ความชุ่มชื่นแก่จิตใจทำให้หนักทำหนักให้เป็นเบาได้นะอย่างเพื่อนก็ดีเพื่อนที่ใช้คำว่ากัลยาณมิตรคือมิตรที่หวังดีปรารถนาดีต่อเพื่อนอันนั้นถ้าเข้าใกล้เราจะได้กำลังใจนะถ้าลำพังเราคนเดียวมันไม่รู้จะไปทางไหนก็ต้องอาศัยมิตรนี่พระพุทธเจ้าว่ามิตรนั่นแหละนี่เป็นจะหลักธรรมท่านว่าอาศัยสัตตบุรุษเนี่ยคือท่านผู้รู้ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทางกายทางวาจาและจิตใจก็จะสร้างกำลังใจขึ้นมาหรือถ้าไม่มีเนี่ยถ้าไม่มีก็หัดคิดสิ่งดีๆสร้างอารมณ์ดีๆให้เกิดขึ้นอารมณ์อะไรที่มันจะทำให้เกิดความเศร้าหมองก็อย่าไปส่งเสริมอย่าไปคิดอย่าส่งเสริมเนี่ยอะไรที่มันเป็นอารมณ์ที่ให้สบายใจนะพยายามส่งเสริมอารมณ์นั้นนะรักษาอารมณ์นั้นไว้จิตใจก็จะค่อยดีขึ้นเย็นขึ้นสบายขึ้น So in this phase where everything is very dark and we don't know how to get out or over this mind state, then very good advice would be to meet a good friend, kalyana mitta, and rely on the loving kindness of the good friend, because a good friend is somebody who has empathy, has got the energy to encourage you to take the heavy things lightly, and rely on friendship, and the well-wishing of others can help us a lot. And sometimes maybe alone one doesn't get over these very dark states, so it is good to have good spiritual companions. Like the Buddha said, like the friendship is friendliness is the beginning of all goodness, and we rely on. Yesterday I got the word wrong. It's sappurisa, like a noble, the true man. Sappurisa, somebody who's well practiced and he's good and he's got loving kindness, and if we don't have good company or somebody we can rely on, then we really need to make an effort not to think in these negative terms. Try to take our thoughts towards good things, auspicious things, things that are positive, that we can consciously recall a good scene or in our minds that will help us see some lightness in all the darkness. आपका प्रश्न था कि कई बार मन के जो स्थिति होती है, मूड बहुत नेगेटिव हो जाता है और उदासी छा जाती है, कोई शक्ति नहीं रहती। ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं हम ताकि हम इसको कैसे बाहर निकलें? तो एक अच्छे मित्र को, एक कल्याण मित्र का हो तो उसके बाद जाके बातचीत करने से लाभ होता है, और उसके जो मैत्री भावना है उससे आपका ये जो नेगेटिव मेंटल स्टेट है उसको हटाने में, उसको दूर करने में मदद मिल सकती है। क्योंकि दूसरों के लिए अच्छी भावना रखना बहुत अच्छी एक अच्छा स्वभाव है, अच्छी प्रैक्टिस है, और एक कल्याण मित्र से आशा की जा सकती है कि वो ऐसा करेंगे। भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप बहुत महत्वपूर्ण है साधना के बल पे आगे बढ़ने के लिए। और जैसे कल भी आपने कहा था कि सत्पुरुष की इम्पोर्टेंस को बताया था कि एक ऐसा मित्र हो जो कि आपकी जिसमें अच्छे गुण हो, उसके साथ तरफ से अच्छे विचार मन में लाने चाहिए, जो पॉजिटिव थिंकिंग है या जो
शुभ विचार हैं, शुभ रिकलेक्शंस हैं, वो हमको करने चाहिए ताकि हम इन Bhante, I had a question about the decision-making mind, the mind that gets confused at times, where there's a dilemma from a small decision that could be from a daily task to a much greater decision that involves a life-making decision. How could you tackle when that dilemma comes in the mind, when you have to, there are two paths in front of you? Is it something we can just observe and hope for it to open up itself, or is there something else we can do to kind of help make that decision? Thank you. ขอการโยมถามถึงความตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราที่เกิดขึ้นในใจของเราบางครั้งก็เป็นของเล็กน้อยชีวิตประจำวันแล้วเขาก็ยังไม่สามารถยังไม่ทราบว่าควรจะเผชิญความทางเลือกอะไรที่จะมันต้องตัดสินใจได้อย่างใดอย่างหนึ่งยังไงควรจะรอไว้ก่อนดูไว้ก่อนแล้วก็ให้มันได้หนทางคลี่คลายปรากฏเองไหมหรือจะทำยังไงครับท่านถ้ามันไม่รุนแรงไม่มีปัญหามากสิ่งเหล่านี้ควรจะใช้เวลาเนี่ยเพราะการตัดสินใจบางทีมันพรวดพลาดก็ว่ามันเร็วเกินไปมันผิดพลาดได้เหมือนกันนะวิธีการอันนี้ ครูบาอาจารย์เอามาใช้อยู่นะอย่างพูดถ้าพูดทางคนมีศรัทธาเนี่ยคนมีศรัทธานี่เขามั่นในศรัทธาเนี่ยแต่ว่าปัญญาเขามันยังน้อยเนี่ยเขาก็จะทำตามความรู้สึกในขณะนี้มันเป็นอย่างหนึ่งบางทีพรุ่งนี้มันก็เปลี่ยนแล้วหรือบางทีไม่ถึงพรุ่งนี้มันก็เปลี่ยนแล้วเนี่ยจิตใจนี่เป็นของที่ไม่แน่นอนมันกลับกรอกได้ง่ายเนี่ยฉันถึงให้ดูใจดูไปเรื่อยๆเนี่ยดูจนให้มันมั่นใจเนี่ยมีสมัยหนึ่งประวัติหลวงปู่ชาท่านว่าเป็นช่วงที่ลำบากใจสำหรับท่านลักษณะคล้ายๆเราท่านบอกว่าช่วงนั้นมันเหมือนกับไม้ที่มันพาดอยู่อย่างนี้เนี่ยมันจะไปทางนี้ก็ไม่ไปทางโน้นก็ไม่ไปเนี่ยช่วงนี้จะเป็นปัญหาลำบากใจมากเลยนะจะดิ่งไปทางไหนก็ไม่ไปนะแต่สุดท้ายก็ต้องดูมันดูเพราะตอนนี้น้ำหนักมันก้ำกึ่งมันตัดสินใจไม่ได้แต่ว่าต่อไปแล้วมันจะบอกว่าทางไหนมันหนักทางไหนมันเบาเนี่ยนั้นถ้าดูใช้เวลาไปหน่อยหนึ่งเนี่ยมันจะมีตัวถ่วงให้น้ำหนักไปทางใดทางหนึ่งให้เราได้มองเห็นชัดขึ้นเนี่ยถ้าถึงตอนนั้นเราก็จะเริ่มจะตัดสินใจได้ว่าเราจะไปทางไหนดีเนี่ยมันจะเกิดความมั่นใจมากกว่าเนี่ยถ้ายังอยู่อย่างนี้นะเราจะผิดพลาดได้ง่ายเนี่ยเราจะเสียใจทีหลังเนี่ยแต่ก็ต้องใช้เวลาดูอีกหน่อยนึง Okay. So Luang Por says, like, if it's not a absolutely pressing and urgent decision, one needs to take time, and it takes time to see things and to observe things over a little time, because sometimes if we move or feel pressed towards a quick decision, we might actually later regret it or have problems about it. And the Kruba Ajahns also warn people that are very faithful, very
convicted towards a certain path and very trusting to go ahead many times, instead of the person that's the panya type of person that waits and discerns first. People with lots of sattva and faith may kind of like just jump ahead in a certain confidence that later, without the wisdom, without looking ahead and applying wisdom, they might oversee that things can change. So it's best to hold back the decision a little bit and look at the mind, look at the factors, look at how the situation is for a certain period, and until one sees in which direction it is going. It is like Luang Por Jundee mentioned, it's like a piece of wood that's supported on right in the middle, and it can flip into either sides. And while it's there and like not yet showing any signs of where to go, like you just have to wait and see. And over time, if you have the patience to observe it, and then there'll be some indications of which part it's leaning to, and then you can follow up on this direction, but don't be too hasty with this. आपका प्रश्न था कि जो हमें जीवन में डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कई बार छोटे छोटे डिसीजन होते हैं, कई बार बहुत लाइफ चेंजिंग डिसीजंस होते हैं, उसमें एक डिलेमा हो जाता है कि दो चीज़ें सामने लगती हैं कि इधर करें ये करें, तो उसको कैसे टैकल किया जाए, क्योंकि केवल ऑब्जर्वेशन से कई बार ये सब संभव नहीं हो पाती। क्या कुछ और उसके लिए कर सकते हैं? तो बनते जी ने जवाब दिया कि अगर कोई काम बहुत अर्जेंट नहीं है, डिसीजन मेकिंग इमीडिएटली करना बहुत ज़रूरी नहीं है, तो अच्छा रहता है कि हम थोड़ा समय रुकें, उसको समझें ठीक से और समय दें ऑब्जर्वेशन को परिपक्व होने के लिए। बताते हैं कि जो लुंग पोर चाह थे या सीनियर अजान थे, वो ये कहा करते थे कि हमको पन्या की बहुत ज़रूरत है, श्रद्धा के साथ पन्या भी होनी चाहिए और उसके हिसाब से काम करेंगे तो ठीक होगा। नहीं तो कई लोग होते हैं जो बहुत जल्दी में काम करते हैं, डिसीजन ले लेते हैं, प्रज्ञा नहीं होती, तो उसके कारण दिक्कत होती है। तो इसलिए और गलत डिसीजन हो जाता है, तो इसलिए हमको कुछ समय रुक के समझ के देख के काम करना चाहिए। वो जैसे उदाहरण दे रहे थे कि एक लकड़ी अगर एक बीच में फलक्रम पे सपोर्ट की जाए तो वो थोड़ा उसको काफ़ी देर तक देखें तो पता चल जाता है कि वो किस तरफ झुक रही है। उसी तरह से जब हम मन के स्वभाव को ठीक से देखते हैं, मन को देख पाते हैं, तो हमें इंडिकेशन हो जाती है कि किस तरफ का डिसीजन ठीक रहेगा। Have a small toilet break. ब्रेक, थोड़े विश्राम करते हैं, 10 मिनट देखेंगे।